So next, I will start unit 3 now. So that A dash. पेज पर जाएंगे सर जी क्या कह रहे हैं? So in the last class, we were finding this area. So it was your G dash, du1 dash, du2 dash. ये शायद बीच में थोड़ा सा रह गया था, टाइम ऑफ हो गया था. This you can write double integral. This is the area formula of surface area of a surface. So this will be under root G del of u1 u2 over del of u1 dash u2 dash du1 dash du2 dash. जो कैलकुलेट कर रही थी इसकी वैल्यू and it was coming this, or this you can write double integral under root G du1 du2 du1 du2, so which is just equal to A, the original area. So that means what? That area of the surface remains invariant. Area of surface remains invariant. Invariant under any transformation, under any coordinate transformation. Transformation. Last class में हमने इसका कर लिया था. So today I will start unit 3 or unit 3rd. Extrinsic geometry. Extrinsic geometry of surface. सर अब फर्स्ट 2 यूनिट्स के तो क्विज लेंगे ना लेंगे अभी. सर डेट आपने वो करी डेट बताएंगे. क्वेश्चंस ओके बना सर रहे हैं अभी. हाँ ओके ओके ठीक है. ये 17.1 आर्टिकल आपका बुक में, और उसमें नोट्स में भी आपके जो नोट्स हैं आंसर के उसमें भी दे रखा है. 17.1 आर्टिकल पेज 166 फ्रॉम योर बुक. बुक का नाम आपका अब्राहम गॉट्स है ना? ये आपकी टेक्स्ट बुक है जो चल रही है, GOET अब्राहम गॉट्स. इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं थी बुक की. So we have already done the normal of the surface. Suppose if I am denoting R as a surface U1 U2 be a surface of class C2, suppose C2 class का surface है whose second order partial derivatives exist and continuous. It is called class C2. And suppose also that let us consider the deviation of the surface. Deviation of the surface from the tangent plane. From the tangent plane at a point P. At a point P with coordinates some U1 U2. At a point P U1 U2 means what? You have some surface, suppose I am taking like this, and it is moving like this, and it has some deviation. At point P you have some tangent,
Suppose here I have tangent. This is your tangent plane. And this is deviating from this tangent plane. ना ये deviation हो गया. At a point P you have tangent plane, it is having deviation. Suppose this distance is D. This is point Q on the surface. This point is in the tangent plane. Okay. So that suppose consider deviation of the surface from the tangent plane at a point B. And I will calculate this deviation. It will give me some physical quantity which I will be using in calculating different things in surface. So suppose this Q is point whose coordinate is some U1 plus Q is neighboring point. Let Q is some neighboring point. So our neighboring point is, I can write U1 plus H1, U2 plus H2. It is some neighboring point on the surface. QB on the surface. And then equation of tangent plane. Now, then equation of tangent plane at P. This I can write P coordinate U1, U2 up to. What I can write equation of tangent plane? याद है किसी को? R minus R U1, U2 dot N is equal to 0 है ना? नॉर्मल या R minus R इसे कर दे R minus R. ये अगर PQ आपके पास, if I am joining this P to Q, so R minus R is the representation for plane. So R minus R dot N is equal to 0. Where N आपको पता है क्या होता था हमारा N normal. I can write N is R1 cross R2 upon mod of R1 cross. R1 pro. It is the normal of the this plane, tangent plane, in terms of R1, R2. Also the distance D, if D is the distance, so this distance D can be given by the distance D of the point Q from the tangent plane. From the tangent plane is how much? D का फॉर्मूला, यस, प्रोजेक्शन से अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन क्या लूंगा मैं? दिस R U1 प्लस H1 U2 प्लस H2, मतलब दिस DR, अगर DR हम लेते हैं तो क्या लिख सकता हूँ मैं? आई कैन राइट D इज इक्वल टू R ऑफ, एक मिनट रुकिए, U2 प्लस H2 माइनस R1 U U1 U2 है ना, U1 एंड डॉट N है ना, ये N है आपका नॉर्मल, इट इज नॉर्मल. लीजिए लिखिए अभी क्या कौन लिखा था. So it's absolute value. Distance अगर हम लेंगे तो I can say the absolute value of this. The distance is the absolute value. यहाँ लिख सकते हैं. Is the absolute value of किसकी? इस फॉर्मूला ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला है. Q minus P into the vector normal vector this, ये डिस्टेंस निकल आती है. इसका आप मॉड ले लेंगे. Now using इसको अगर हम some number देते, suppose 1. Now using Taylor's theorem,
Using Taylor's theorem, I can write R of U1 plus H1 U2 plus H2 है ना. Taylor's theorem क्या होती है? F of A plus H B plus K in terms of function जो हम कार्टेशियन में लिखते हैं. यहाँ पे पैरामीट्रिक में U1 plus H1 U2 plus H2. So if you remember, you have studied F A plus H B plus K is equal to F of A comma B, है ना. That means R of U1 U2 then plus plus del F over H1 del H1 del F over del X plus K del F over del Y at the point AB है ना. इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? This I can write RI HI है ना, क्योंकि ये सबमिशन है आपका R1 H1 plus R2 H2. dummy index. हाँ डमी. Then second term आता था H square by factorial 2 second derivatives. तो उसको I can write 1 by 2 R of IJ HI HJ H2 and plus higher order of this term. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं higher order of, ये little o होता है, o जो बताया था आपको little o yes sir yes. initial lectures. So it is higher order power of this. Where so Rij is what? Where Rij is del 2R over del Ui. Del U1 del UJ. So it is a Taylor series in terms of parametric coordinates, है ना, parametric representation. वो ये same जैसे आप Fa plus H B plus K लिखते हो. So putting this value in one, इसे left hand side ले जाइए. तो ये जो value, what is the value of this? You can write. So putting in one, we get D is equal to RIHI RIHI से start हो जाएगा ये. So you have RIHI plus half RIJ HIHJ plus higher order terms of H1 square H2 square and this dot n. When you will take dot product, so what will happen? Ri dot n hi इसे अंदर ले जाए n को plus half Rij dot n vector hi hj plus इसमें हायर ऑर्डर में जब आप डॉट लेंगे इसे एज इट इज लिख देंगे ना, जो हायर ऑर्डर टर्म्स होते हैं this into dot it will same as it is. And what about this Ri dot n? 0. This is 0 है ना, because R1 is a tangent vector and is a normal vector, so this is 0. So you have only this term. So this equal to, you can write half of Rij dot n into hi hj plus order of h1 square plus h2 square. Okay. Now this term I will denote by the ये जो आपका term आया Rij dot n, here I will denote it by Bij. We now introduce the notion. We now introduce the notion Bij is equal to Rij dot n. Okay. इसको मैंने Bij से नोट कर दिया, ये टर्म आ रहा था आपका, इसे अभी यहाँ टू कर रहे हैं. So we introduce this notion Bij, Rij dot n. This Bij is important. So this Rij dot n, इसे अगर आप सॉल्व करके लिखें, this you can write Rij dot R1
cross R2 upon mod of R1 cross mod of R2, or this I can write is a triple product. So this I can write Rij R1 R2 upon under root G, है ना? Yes, sir. So this got you got Bij. So keep in mind Bij by this. By this I can find Bij. So this is equation suppose 3. So it means the distance, so from 2 में क्या आया था कि distance equal to how much you are getting? So from 2 the distance of the point Q, Q U1 plus H1 U2 plus H2 जो है ना, U1 plus H1 U2 plus H2, the point Q on the surface आपका क्या है R of U1 U2 from the tangent plane at point P. Tangent plane आपने P से denote किया is given by T is equal to half of Bij HI dot HJ, है ना? ये जो डिस्टेंस इसको मैंने Bij से डिनोट कर दिया, कहाँ गया बटन, ये है ना, इससे B से डिनोट कर दिया तो Bij dot HI dot HJ, and I am neglecting the highest order term, so this will be the distance, है ना, neglecting the terms of order higher than 2 in OF H1 square. इन टर्म्स को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि जब आपका H2 H1 sufficiently close होगा P के, they will be very small quantity, so I can neglect them. So this is the distance formula for between a point Q and P on the surface. P and Q are on the surface and this is a tangent plane. Okay, so it will tell you the deviation from the tangent plane, and you will see in the coming lectures this deviation will tell you so many things about the curves, and I will be using this thing for finding different quantities of the curve, how much it is deviating from the curve ना, इससे हम चीजें कैलकुलेट करेंगे आगे. So it is the formula for this thing. Next thing we have here the second fundamental form. First fundamental form हमने पढ़ा, that was a metric form also, है ना, Gij जो हमने निकाला था. Then we have second fundamental form. SFF. इसे curvature form भी कह सकते हैं, curvature form. First fundamental form थी metric form, है, that formula comes from the metric distance, ds से निकाला था हमने. Yes, sir. So here also, and that was a quadratic equation. क्या था Gij? What was your first fundamental form? Sir, ds square is equal हाँ to Gij हाँ ds ये था. अगर dui. हाँ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म अगर मैं इसे फर्स्ट से जोड़ कर दूं तो ये आपका ये था Gij dui, dui. है ना. अगर ये फर्स्ट ds2 को इससे रिप्रेजेंट कर दें, हियर ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म थी FFF. सेकंड नहीं, ये साइड में लिखा. द क्वाड्रेटिक आती थी आपकी ये du1 स्क्वायर du1 u2 प्लस du2 स्क्वायर.
Yes. अब Yes, यहाँ sir. पर भी आपके पास ये भी एक क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, द क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म को मैं इस तरीके से लिख दूंगा, सेकंड, ये फर्स्ट थी, सेकंड है, ये भी नोटेशन होती है। दिस विल बी इक्वल टू बी आई जे डी यू आई डी यू जी। ठीक, दिस इज योर सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, where Bij is what? Rij dot n. Rij dot n, ये जो हमने पीछे किया ये आ जाएगा। यहाँ Gij आपका होता था Ri डॉट आर, Rj. है ना, ये था, ये Bij है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स अ डिफरेंट। ये जो है Bij आपका, दिस इज Bij, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट हैज रिलेशन विद G आल्सो। दिस इज योर सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, द क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसको नंबर 4 कर देते हैं, पीछे 3 था, तो 4 अगर हम कर दें, this is called the second, बल्कि इसे 5 कर लिए, 4 हम उसे लिख देते हैं, तो फॉर्मूला टाइप किया था उसकी जरूरत पड़ेगी। इट इज 4, दिस इज 5, दिस इज कॉल्ड द सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। शॉर्ट में आई कैन राइट एस एफ एफ ऑफ द सरफेस, R is equal to R of U1 U2, okay, and you can see here that this Bij is also symmetric, because Bij is what, this dot product, so we can see here Bij is equal to Bji, है ना, जैसे यहाँ Gij is equal to, because dot product is commutative, है ना, हाँ, so it means 5 can be written as, so 5 this can be written as, इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं, this second fundamental form is, you can write B11 du1 square plus twice B12 du1 du2, है ना, because of symmetric property, B12 du1 du2 plus B21 du1 du2 du1, it will become twice, add हो जाएगा, plus B22 du2 whole square, okay, so you can write in this expanded form also. It is your second fundamental form. Suppose it is question number 6. बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको भाई स्टूडेंट्स? Yes, sir. We have one theorem which the signed distance, of the point u1 plus h1 u2 plus h2 of surface r is equal to r of u1 u2 of class C2 from the tangent plane at u1 u2 equals delta is equal to half of Bij Hij with an error of order higher than 2 relative to under root h1 square plus h2 square। तो ये थ्योरम वही जो अभी हमने आपकी प्रूफ करा पीछे, वो थ्योरम है ये। द साइन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द सरफेस of class C2 from the tangent plane
इक्वल टू दिस, है ना। डेल्टा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें यू आर रिमूविंग दिस टर्म, सो इट मींस इट विल बी हैविंग सम एरर, है ना। दिस क्वांटिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस बिकॉज यू हैव रिमूव्ड सम टर्म्स। इससे अगर आप ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन निकालें सेकंड फंडामेंटल फॉर्म का, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन GATIO of SFF. So what will be the value of, if you see second fundamental form की वैल्यू क्या है, this is your second fundamental form, है ना, BIJ HI HJ, इसको मैं SFF से कंसीडर कर सकता हूँ, देखो DUI DUJ का। So here you can see this the value of second fundamental form which is suppose यहाँ BIJ HI HJ, this at the point P U1 U2 is equal to the twice of the length, twice the length of the perpendicular from the neighboring point, GA, sum q U1 plus H1 U2 plus H2, और ये कहाँ पर, on the tangent plane at P, tangent plane at P, है ना। देखो, तो what is your second fundamental form geometrically? It is equal to the twice the length of perpendicular, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो आपका जो मैंने प्लॉट किया था ये, है ना, 2D, so this is equal to 2D twice delta, here you can say. So the second fundamental form is twice the length of the perpendicular of the neighboring point on the tangent plane at P if terms of higher order than 2 are neglected. If terms of order higher than 2 in H1 H2 are neglected, है ना। ठीक है भाई, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गई आपकी, नहीं? Yes. Basically क्या हुआ कि if you have two neighboring points, draw a perpendicular from neighboring point on the tangent plane, find a distance. So twice of that distance will be nothing but second fundamental form, है ना, if you are neglecting these terms. So the coefficients of Bij, जो हमारे coefficients हैं Bij, these are the coefficients B11 B12, this we can calculate, है ना। So these coefficients given by this formula and contact. So this you can find. So we have some different relations. Now I can find Bij से all other things. देखो, now you have Bij. So let us find some different notations. So let differentiating the relation n dot ri. देखो n dot ri कितना होता है, 0 है, ये तो आपको पता है ना।
इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, आई वांट टू ड्राइव सम मोर फॉर्मूलाज, सो ऑन डिफरेंशिएटिंग n डॉट आर आई, क्या मिलेगा आपको? बाय पार्ट जब आप करेंगे तो यू विल बी गेटिंग n आर आई जे प्लस एन जे डॉट आर आई इज इक्वल टू 0 बाय पार्ट, ठीक है? तो दिस मीन्स, है ना, इससे हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ये रिलेशन है आपके पास, नॉर्मल विद टेंजेंट वेक्टर इट इज ऑलवेज 0। So when I will differentiate, I will apply the by part formula, n dot rij plus nj dot ri is equal to 0. So it means what? You got n dot rij is equal to minus nj dot ri, and this is your bij. So this implies that bij is minus nj dot ri या ni dot rj. ij को I can move here, है ना, because both are running 1 to 2. I and j are running 1 to 2. So this is another formula for finding bij in terms of normal. देखिए, है ना, if you have normal that ni dot rj, so it is the formula in terms of one order derivative. It is number, इसको भी कुछ नंबर रख लेते हैं आप, 6 or 7. Clear है भाई? Is it clear? So bij is can be calculated by using ni dot rj also, and we write b. You will see so many things we will finding in the similar way we have done for first fundamental form. B is what? Determinant of bij. इसे हम b से डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ g था आपके पास, it will be what? Determinant of b11 b12 b21 b22, or you can say b11 b22 minus b12 square. Is it clear? This is the determinant of b, है ना? Yes, sir. Or also if your surface is given in Cartesian form, suppose if the surface is given in Cartesian form, Cartesian coordinates, Cartesian coordinates, कैसे दिया होगा कार्टेशियन में भाई? x will be given to you, है ना, y they will be function of u1 u2, and z is a function of u1 u2. x y z के terms में अगर given है, then you can write bij will equal to how much? तब bij की वैल्यू क्या हो जाएगी? bij हमने क्या निकाला था? हाँ, तो bij जो अपन आपके पास आया था, bij was then bij इसके टर्म्स में you are getting, ये आया था एक rij r1 r2 अपॉन अंडर रूट जी, है ना, इस टर्म में। तो here your bij will be what? तो जब आप rij करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट जी। अब rij का मतलब ये r के टर्म से गिवन होगा ना, अब r आपके पास ऐसे गिवन होगा x y z, तो when you will find it will be x ij y ij z ij
and R1 means X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, है ना? टर्म्स अगर आपके गिवन है कुछ तो यू कैन फाइंड Bij in terms of कार्टेशियन फॉर्म. इस सपोज इक्वेशन नंबर 8 डाल सकते हैं इसे. ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई गॉट इट. एंड ऑल्सो one more relation I can find, minus, suppose I want to find minus din dot dr. Minus dn dot dr will be what? So dn is how much? Ni derivative, है ना? This is differential. Differential of df is what? f1 du1 plus f2. ये तो होता है. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? fi dui. Okay. So my dn can be written as ni dui and dr can be written as rj duj. Or this you can write minus ni dot rj dui duj, and this is how much? This is bij. Minus ni dot rj is how much? Minus bij, है ना? ये अभी निकाला है हमने, ये 7 से. It is minus bij from 7 dui duj. So it will become minus minus plus bij dui duj. And what is this?